Good afternoon everyone, myself Vaidehi Patil, your teacher of CS1. So guys, I know this is very difficult situation for all of us. So you just be safe, be healthy, stay at your home. So due to this pandemic, all the work has been stopped, but education is a system that should not stop. So due to this reason, our principal, our vice principal Shinde sir, our HOD ma'am and all our college committee have decided to start the online lecture. So that's why I'm here today. So I would like to say thanks to all of them for taking such kind of initiative. Okay guys. So as Aarti ma'am already have told you about the CS2, I'm here to explain you some concept of CS1. Okay guys. So CS1 is basically regarding with the programming and obviously softwares, right? So basically I would like to introduce this session in a 4 different parts. So first one is operating system. Second one is data structure, third one is C++, and fourth one is HTML. Okay, so let's have a look on operating system. Okay guys, so basically now at this moment you are able to see me, right, on your mobile phones, on your laptop or on your PCs. So in your laptop, mobile phone or PCs, there are some kind of system which is operating. That is operating system. Like if you are using mobile phones, you have Android. If you are using your PCs and laptop, you have Windows. If you are, or might be it's Linux. If you are operating Apple phones, then you have Mac as operating system. So operating system is a kind of software or it is a kind of programming that would help you for various kind of manners to operate that particular system. So here we have the example. Suppose you are operating on a mobile phone, you have Android as your operating system. Suppose you have PCs or laptop, you have Linux or might be Windows. And suppose you have Apple with you, so it is also called as MacBook. So Mac is nothing but that operating system which was just designed for the Apple mobile phones or Apple company, right? So in front of you, you have one diagram. You just observe it carefully. That would going to give you the brief knowledge of operating system. So guys, operating system is basically the interface between user and the hardware. So here you have one diagram. See, at the topmost there are users. So users means we are the users. If we want to access anything from the computer, we need some applications. For example, suppose I want to write something, I want to type something. So might be I need Word, might be I need Notepad. So Notepad and Word are the kind of application that we need. So user always access the PC or anything that they want through the kind of applications, right? So here you can see user, application, and then you have the intermediate stage, that is operating system. Without operating system, you will not able to access the hardwares. So you have hardwares at the end. Hardwares might be your control processing unit, might be printer, scanner, that is input output devices, or might be you have some memories, RAM, hard disk, such kind of devices are the hardware. So suppose guys, you need to handle that devices, you need to access that devices. So you need to go through some programming and coding, because suppose for an example, I would like to give you one example. So in the example you can see here we have the computer, user, computer, and then you want to access the printer. So suppose you want to access that printer, so what you will do, you will going to give the command of print. That command should be go into the coding language, because our language is something different which your computer will not able to understand, right? So मैंने just बोला कि मुझे print चाहिए, I want print. तो मेरे ऐसे बोलने में तो printer आपको print नहीं देने वाला. What you have to do? आपको एक coding के through जाना है. So ये सारी चीजें कहाँ से हो रही है? ये सारी चीजें हो रही है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से. तो जैसे यूजर ने प्रिंट बोला, तो वो कमांड एक कोडिंग लैंग्वेज से होते हुए दैट विल रीच टू द पर्टिकुलर हार्डवेयर, दैट इज प्रिंटर, और फिर आपको प्रिंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. So just now remember, you have thousands of input output devices, like you have keyboard, you have mouse, you have printer, you have scanner. So each and every time it is not possible to write the individual code. क्या हमेशा मैं एक अलग से कोड लिखते बैठूंगी, अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करूंगी? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो योर सिस्टम मस्ट हैव सच काइंड ऑफ थिंग्स, और ये जो हमारे नीड है, जो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम.
So basically it's nothing but the bridge. We can say it's acted as a bridge between the user and the hardware. So user और hardware के बीच में जो communication हो रहा है, that is due to operating system. So let's have another example. Suppose now in the diagram you are able to see here. Suppose one user is already printing some documents from the printer, and now the another user want to access that printer, right? अभी now just tell me, दोनों भी यूजर, एक यूजर ऑलरेडी प्रिंट कर रहा है, तो सपोज नाउ इट्स अप टू मी कि मेरा कैरेक्टर ऐसा है, चलो मैं प्रिंटर यूज कर रही हूँ, तो मेरा जब तक भाई मैं यूज कर रही हूँ तो मुझे नहीं एक्सेस देना किसी को, तो यार दिस इज नॉट फेयर. After completion of your work, that particular person need to give that access, right? So उसको access देने का काम कौन करेगा? उसको access देने का काम एक operating system करे, right? So यहाँ पे if the first user have done with the printing process, then another user should take. Okay, so in this case, what is the duty? What is the job of operating system? Operating system will give the authority to that second person after completion of the work of the first person. तो पहले वाले यूजर का जब काम फिनिश्ड हो जाएगा, so वो प्रिंटर से तो डन हो गया, now we don't want the printer, so that access will now transfer to the another person. तो फॉर एग्जाम्पल कोई आप प्रिंट दे रहे हो और साथ में दूसरे किसी पर्सन ने भी कंप्यूटर से प्रिंट दे दी, सो नॉट एन इशू, वो उसके फर्स्ट वाले के डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद सेकेंड वाले के डॉक्यूमेंट्स अपने आप प्रिंट हो जाएंगे. तो ये सारे जो कोडिंग है, प्रोटोकॉल्स है, एथिक्स है, ये सारे कौन दे रहा है गाइस? एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे. सो हमें ये वाले चैप्टर में बिल्कुल यही स्टडी करना है. हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. फॉर एग्जांपल अगर आज के डेट की बात करो तो विंडोज ने जो मार्केट है वो 82% मार्केट इज ऑफ विंडोज नाउ, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग योर लैपटॉप, योर पीसीज, देन यू हैव विंडोज एज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? So before 2008, I can say if you see here, 95% of the market is only of Windows. But what was the reason behind that 95%? That is convenience. People always want some convenience, like user friendly. Windows को ऑपरेट करने में ये इतना सिंपल है कि एक छोटा सा बच्चा भी इसे इजीली एक्सेस कर पा रहा है. So due to that convenience, it has 95% market all over the world, I can say. But due to some kind of stuff that Linux has included, that is throughput. So might be you heard this word throughput. Throughput is a kind of stuff that means the number of tasks you can perform per unit time. एक सिंगल टाइम में आप कितने टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो? तो लिनक्स के ओएस में उतनी कैपेबिलिटी थी कि एट द सेम टाइम कॉपी भी हो रहा है, पेस्ट भी हो रहा है, प्रिंट भी हो रहा है, स्कैन भी हो रहा है, इनपुट भी ले रहा है. बट विंडोज ने वो फैसिलिटी शायद थोड़ी सी कम दी थी, वो उसने उतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की थी. इसीलिए लिनक्स फिर मार्केट में, इंडस्ट्री कॉर्पोरेट में लिनक्स का जो वैल्यू है वो थोड़ा बढ़ता चला गया, एंड नाउ दी विंडोज हैज 82% मार्केट, राइट? सो दिस काइंड ऑफ स्टफ वी हैव टू स्टडी इन दिस मॉड्यूल. सो बेसिकली ये मॉड्यूल में हम स्टडी करेंगे वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, हम स्टडी करेंगे डिफरेंट ड्राइवर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं. सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट मॉड्यूल, आई कैन से, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन नाउ द सेकंड मॉड्यूल. Okay guys, so here we have next topic, that is data structure. So basically data is nothing but a quantities or a symbols or a characters, so that your computers can operate that particular thing, so that your computer can perform some various operation on that data, right? So for example, here it is written C is equal to A plus B. So in this case guys, A and B are nothing but my data. So here I am going to perform the operation. In this case the operation is addition, sum of A and B. So A and B are nothing but the data. So यहाँ पे क्या है guys, ये data है. data यानी इस पे कंप्यूटर कुछ तो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. So such things are known as data. So after performing the various operation, it might be sent as a electrical signals, तो वो एक data है. So in this case A and B are nothing but my data. Okay, now here you see what is the difference between data and information. See, ये दोनों के बीच का difference समझना बहुत important है. Sometimes you just misunderstood that data is the information. No, not at all. See, in front of data I have written something. Will you able to read that? Yes, might be you will able to read.
but can you get any meaning from that? No, not at all. So data is a collection of characters. यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो देख के पढ़ने की कोशिश भी करो. इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज प्रॉपर, सो आप कुछ भी प्रोनाउंस करके इसको बोल सकते हो. बट क्या इससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कोई मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन? नो. So data is nothing but just a collection of characters. You don't get any meaning out of it, right? अभी सेकेंड एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन के आगे मैंने वही कैरेक्टर्स को जो मैंने डेटा में लिखा हुआ था उसे ही मैंने प्रॉपर मैनर में अरेंज किया हुआ है. नाउ यू विल गेट द मीनिंग ऑफ इट. माय नेम इज वैदेही. सो हियर you know you'll able to understand something कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. माय नेम इज वैदेही. So in the data you won't able to understand, that's just a collection of characters. But information means meaningful. Meaningful word जहाँ पे आता है, that is the information. So if you are arranging data in a proper manner so that you will get some meaning out of it, that is known as information. So basically collection of characters are data and proper arrangement of the data is nothing but information, right? So here I think you get a difference between what is data and what is information, right? So why we need data structure now? Now it is not a difficult task, you know, to arrange the data as information. Data को information बनाना is not a difficult task. हमें सिर्फ क्या करना है? We have to do lots of operation. ऑपरेशन में नहीं बोल सकती, हमें सिर्फ डेटा को प्रॉपर वे में अरेंज करना है. तो अगर हमें किसी चीज को प्रॉपर वे में अरेंज करना है तो हमें क्या चाहिए होगा? स्ट्रक्चर. तो यहीं से ये नाम आ गया डेटा स्ट्रक्चर. सो इफ आई वांट टू अरेंज डेटा इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस सो दैट it will become meaningful, so we called it as information. So we need some structure, so that's why the name is data structure. So in this way हम क्या करने वाले हैं? हम लोग करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर. सो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो भी पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे हमें देखना है कि व्हाट इज डेटा, डेटा स्ट्रक्चर कौन से टाइप के होते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव ऑलरेडी अवेयर अबाउट 11th स्टैंडर्ड C++, सो यू माइट हैव हर्ड एरे. अगर एरे नहीं है तो अभी ये सेमेस्टर में तो आप देख लोगे कि व्हाट आर एरेज. बट एरेज इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द इंटीजर. मुझे अगर बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत है ABCDEFG, so instead of occupying the different memory space for that particular variables, I will just take one array. So array is nothing but the arrangement, sequential arrangement of particular data, stack, array. So such kind of data structure we need to study in this module. So the best example of data structure if I would like to give you is say here, if you are typing something on a word or on a notepad, you have redo undo operations. So might be मैंने कुछ लिख दिया है, so you can see here stack operation it is called as. मैंने मेरा स्पेलिंग लिख दिया और यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई गाइस. मुझे वैदेही लिखना था बट मैंने गलती से यहाँ पे वैदेही के जगह पे स्पेलिंग था वो मैंने बाय मिस्टेकली रॉन्ग कर दिया है. तो ये जब डेटा स्टोर होता है गाइस तो एक स्टैक में स्टोर होता है. ठीक है, स्टैक इज अ मेमोरी स्पेस. नाउ सपोज मुझे अब ये एग्जांपल आपको नहीं भी है तो आप छोड़ दो इसको, लेकिन इट्स नॉर्मल थिंग कि मैं वर्ड में कुछ टाइप कर रही हूँ और मेरे से कोई गलती हो गई और इफ आई वांट टू रेक्टिफाई दैट कि नहीं पहले वाला इज बेटर, सो व्हाट यू विल डू, आप उसको कंट्रोल जेड कर देते. कंट्रोल जेड इज अंडू हो जाता है. सो अंडू रीडू, तो these are the processes. Data कहीं तो मेमोरी में स्टोर है, राइट? सो दैट्स व्हाई यू विल एबल टू गेट दैट डेटा बैक. तो वो डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? वो डेटा स्टैक में स्टोर होता है. सो डेटा का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है वहां पे, सीक्वेंस में स्टोर किया हुआ है. दैट्स व्हाई आफ्टर अंडू यू आर गेटिंग द बैक वाला स्टेज, वापस यू आर गेटिंग दैट स्टेज अगेन, राइट? सो दिस प्रोसेसेस जहाँ पे हमें एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर स्टडी करने की जरूरत है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टैक, राइट? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द अनदर टॉपिक. So next topic is C++. The next module is C++. Guys, I don't think I need to spend more time on this topic because you are already aware about in 11th standard you have some introduction of C++, right? So basically in this year you are going to study the details of C++. See, C++ is basically a language that you should learn if you really want to go into the software field because it's a basic language. अगर आपको C++ आ रहा है, so after that you will able to study various languages. So C++ you have already aware about. In this module we are going to study some arrays, what is function overloading, what is inheritance, what is polymorphism, what is functions and classes, objects. So this kind of concept
जो C से थोड़ा सा हटके, जो C++ में include हुए, that we gonna study, right? Again, I would like to mention over here that OOP, it's called as OOPS, it's object oriented programming. So basically you have already aware about the C. So C is not object oriented programming, C++ is object oriented. So what it mean exactly? क्या होता है यार ये object oriented programming? क्या है classes and object? What is polymorphism? What is inheritance? That all stuff we are going to study in this C++. So I hope that after studying this you will able to write any program in C++ with the proper structure. So that was okay guys. So I hope कि ये यार पूरा मतलब स्टडी करने के बाद आप खुद का एक प्रॉपर प्रोग्राम डिजाइन कर सको इन C++, सो दैट आगे भी आपको कोई लैंग्वेजेस सीखने हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, राइट? सो इट इज लाइक अ पेरेंट, अगर ये आपको आ रहा है तो बाकी के लैंग्वेजेस आर इसके किड्स, सो वो सारे लैंग्वेजेस आपको इजीली आ जाएंगे. Okay guys, so let's have a look on the last module, and that is HTML. Okay, so last topic is HTML. So I hope if you have a little bit of interest in website designing, web development, full stack development, so might be you heard this word HTML. So I just want to abbreviate. HTML is a hypertext markup language. So why the name given markup language and hypertext, that I will come, but just I would like to mention over here, if you are really interested in a website development, web designing, आप खुद का एक वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो, वेब डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको शुरुआत जो स्टार्टिंग है, आपका जो वे है उसका स्टार्टिंग इज HTML. So HTML is basically known as markup language because, for example, आप यहाँ पे देख सकते हो, I have written P. So P stands for paragraph. तो अभी आप अगर HTML में कोई टैग्स यूज कर रहे हो, ये एक सिंटैक्स है. जैसे आपको वेबसाइट बनानी है तो ये सिंटैक्स चाहिए कि मुझे एक पैराग्राफ लिखना है वेबसाइट में, सो यू नीड द टैग दैट इज P. सो P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ. तो देखो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर लिया हुआ है, सो दिस इज नोन एज मार्कअप टेक्स्ट. हम लोग एक पर्टिकुलर वर्ड का सिर्फ स्टार्टिंग के लेटर्स उठाते हैं और उसका सिंटैक्स बताया जाता है. सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज एज कंपेयर टू एनी अदर लैंग्वेजेस, राइट? Now suppose you have you want to change the line, आप न्यू लाइन में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे टैग होता है that is BR. So BR means break tag. You want to break your line over there and you want to come to the new line. So BR stands for break. तो break का spelling में देखो first two letters are BR. So that's why the name given markup. You are taking some initial words of that particular initial letters of the particular word. So suppose I want to give any syntax, like मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है in the brackets I have written P, then again you have some content, any content, and then you are closing the tags. So this is the basic syntax of HTML. So first you need to open the tags, then you have to write that particular tag name, like P for paragraph. You have to write the content, whatever you want to write on your website, then at the end you have to close that tag. So the complete statement is known as elements, right? So basically why HTML is has that much importance, because the answer is web designing. So if you want to design your own web page and you want to really go into this career, so this is the best way. So basically in CS1 we are going to study all the different categories, like operating system is something different, C++ is different, data structure is different, and again the HTML is different. So 4 different modules which has the own its different meanings and different stuff. 4 of them are totally different. So yes, in next lecture we will start with the operating system. I hope you're gonna like the lecture, and I know online it's very difficult for teacher as well as students to get that point, that content, that knowledge, but we are trying our best, and you also give your proper time for the particular lectures. Be attentive. If you have any doubt, then you can just ask us, and we are always there to solve your problem. So all the best all of you. Again, be safe, be healthy, and thank you so much. We'll meet again.